गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ओम. Let there be peace, let there be peace and love amongst all the human beings of this universe. Let there be peace, let there be peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. We have started the contemplation on the chapter number 18th, the story of Veetahavya. Veetahavya is the sadhak. He wanted to do something so that he will attain the total inner tranquility. उसको पूरी शांति, सिर्फ थोड़ी की शांति. Like Shukopakhyan also deals with the same thing only. Shukadev also wanted to have total inner tranquility. Tranquility तो आती है, पर वो फ्लक्चुएटिंग रहती, थोड़ी देर रहती, चले जाती, फिर कंटेनमेंट आता है या चले जाता है, फिर ब्लिसफुल स्टेट थोड़ी देर रहती, फिर मिजरेबल स्टेट आती. So he wanted total inner tranquility, and for that then he tried to find out different methods, and that's the story which Vasishtha Rishi is telling to Rama. वो स्टोरी है वो जो वशिष्ठ ऋषि रामा को बताना चाह रहे हैं, और ये 18th चैप्टर में है, इसलिए उसका नाम दिया है वितहोपाख्यान. वितहोपाख्यान, वितहव्योपाख्यान. वितहव्य उसका नाम है, स्टोरी ऑफ वितहव्य. So let us now again start. We did yesterday 2 shloka, but quick review we'll do. First topic in that is Praana Spanda Nirodha. So that is the control of the movement of prana, of the vital air. So let us start now. What are the Pancha Mahabhutas which are aware? We are aware about the earth, which is the grossest. एकदम solid. दिखती है अपने को सबको अर्थ. Okay, yes, gross. After then water, yes, we see that Sukshma. A lot of water turbulence, waves are there, tsunami is there, small waves, big waves, but that is all part of either a pond or a lake or sea. That is the water. Second Panchama. Then again a subtler, that is the fire. We can see the fire. We can definitely have the attributes of fire known to us because it is gives the hit, and if it is near us, we get it experience. So we are be always away from fire. Then fourth is air, and prana comes under this category 4, which is a subtler. We can't see, but everywhere it is there. We require oxygen to remain alive. That is our prana. And fifth is akash. Akash is supporting everyone. We can't see that, but it is very much there. Everything is happening in akash, and that's why we talked about 3 kinds of akash. One was bhutakash, in which everything is happening. This meeting or this contemplation or this YouTube recording is happening in bhutakash only, where the duality is predominant. Second is chintakash. Duality is not that predominant, but the thoughts are predominant. So chintakash. And third is chidakash, where there is a solid conscious existence. वहाँ ईश्वर छोड़ के कुछ है ही नहीं. That is only one thing, ईश्वर. That is only one solid consciousness. That is nothing other than that. So that's what has been seen here, and that's what has been known for having no objectivity in that. So that's what has been told. So this was regarding Akash. Now let us go to Prana Spanda Nirod. How to control this pran, which we are supposed to say. So Vasishtha Uvacha, shloka number 1. Athe mam aparam rama shrunudrushtim pradam Veetahavyo muni kashit udvigno hi kriyakramat. ये वीतहव्य जो ऋषि था, ये बड़ा परेशान हो गया. इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ, इतने दिन से जप कर रहा हूँ. अपने लोगों का भी वही समस्या है. इतने दिन से गजानन महाराज के यहाँ जा रहा हूँ, इतने दिन से भगवान रामकृष्ण के यहाँ जा रहा हूँ, इतने दिन राम मंदिर जा रहा हूँ, इतने दिन कृष्ण मंदिर जा रहा हूँ, इतने दिन दरगाह जा रहा हूँ, इतने दिन अल्लाह के यहाँ जा रहा हूँ. इतना करने के बाद रामा हियर नाउ दिस मैचलेस नॉलेज विच गिव्स द सुप्रीम पोजीशन. रामा को बता रहे हैं अथमाम अपरम राम श्रुनु दृष्टिम पद प्रदाम.
ये मैचलेस नॉलेज आपको मैं बताता हूँ, which cannot be matched, is so infinite, supreme position देने के लिए. A certain sage Muni called Veetahavya, disgusted with the performance of the religious rites, having renounced all the rituals for the sake of Nirvikalpa Samadhi or absorption in absolute consciousness, slowly withdraw or restrain his mind, having sat down in a pure place. तो क्या किया इसने? ये बीता सब पूजा कर ली, जप कर लिया, ध्यान कर लिया, पर माइंड कुछ स्टेबल नहीं हो रहा, तो एक जगह बैठ गया. So that was first and second shloka. What is then after the third? बाह्यन अभ्यंतरश्चैव स्पर्शान् परिजः क्रमात् तथा स्वमनसा स्थैर्य कांक्षे मानो व्यचिन्तयात्. Gradually he abandoned all contacts, external as well as internal. Then desiring the firmness or fixity of his mind, he reflected as follows. वो अभी चालू कर दिया उसने. Now he started contemplating. So what are the four gateways of liberation? First is contentment, second is tranquility, third is holy company, fourth is the enquiry, that is contentment. He started that fourth one. Or aho na chanchalam chitta pratyahatam apishanat ghatat patam upayati patat shakatam mutkatam. The mind is indeed unsteady in a moment, even though withdrawn. From the vessel it approaches the garment, from the garment it approaches the spacious card. It jumps from one object to the another object. He started observing his mind. एक जगह बैठ गए शांत और सब कुछ कर लिया था, जब ध्यान पूजा ये वो जो कुछ दान धर्म सब कर लिया था, कोई मन शांत नहीं. और एक जगह बैठ गए, फिर सोचने लग गए मन क्या कर रहा है. मन अभी बैठा है बजाज नगर में, थोड़ी देर से जाता है बर्डी, फिर उधर से निकलता है धर्मपेट, उधर से निकलता है नेदरलैंड्स, उधर से निकलता है और कोई बम्बई, Lucknow. Likewise, it keeps on moving. One object to another object, one place to another place. देश काल वस्तु में मन घूमते रहता है. That's what he has noted. So, shloka number 5, chapter number 18, page number 180. So, chittam artheshavo yati padepeश्विनमर्कट aham chetanamityetvam chittam tvam manase vrutha. Alas, the mind moves among objects as a monkey moves among trees. Mind you vanily think, I alone am sentient or a consciousness. तो समझा के बता रहे मन को, अरे मन तू ज्यादा ही फालतू सोच रहा है, तू ऐसे ही सोच रहा है कि तू सोच रहा है कि you are all things, you are everything, but actually you are not everything. The consciousness is everything. You are the superimposed thing on the consciousness, and you are not understanding that. You should understand that. That's what has been said. Atyanta bhinnayo ekam nasti chinmayo shatha ahankarat aham jiva ityapi taja bhavanam. There is no identity between consciousness and the mind, which was completely different. Abandon even the idea that I am the individual soul and born out of egoism. So now what has been happening is, now this Veetahavya, which is a Muni, he is telling his mind. What he is telling his mind? Veetahavya बता रहे हैं कि अरे मन तू अपने आप को कॉन्शियसनेस मत समझ. तू तेरे वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है और तेरे वजह से सब कुछ सब मुझे परेशानी है. तेरे वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ और तेरे वजह से सब समस्या आ रही है. और तू अपने आप को भगवान समझ रहा है, कॉन्शियसनेस समझ रहा है, सेल्फ समझ रहा है, डिविनिटी समझ रहा है. एक्चुअली तू ऐसा नहीं है, क्योंकि तेरे में बहुत कचरा भरा हुआ है. तू सोचते रहता कुछ कुछ, अपने ही मन से कुछ कुछ सोचता है, अपने मन से कुछ कुछ इमेजिन करता है, अपने मन से कोई वस्तुओं के और व्यक्तियों के पीछे लगता है और मुझे परेशान करता है. सो यू ड्रॉप दैट, बेटर यू ड्रॉप दैट. तू अपने आप को इंडिविजुअल सोल समझता है, तू है नहीं वो, पर अब वो क्यों सोचता है? तुझे ईगो है. तू अपने आप को बॉर्न आउट ऑफ इगोइज्म, तुझे बहुत ज्यादा ईगो हो चुका है कि मैं ही सब कुछ. ऐसा तो तेरे को लगता है. तो कौन डिस्टर्ब हो रहा है जीवन में? बॉडी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ईश्वर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ये मन डिस्टर्ब हो रहा है. ये मन ही सब चालक है. तो अपना काम क्या है? अपना काम है ये मन को कंट्रोल में रखना. अगर कहीं कोई जंगल में हाथी परेशान कर रहा है तो शेर को कंट्रोल करके कोई फायदा नहीं, हाथी को कंट्रोल करना पड़ेगा. वैसे जगत में कंट्रोल जगत को करके फायदा नहीं है, अपने को अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा.
मन ही अपना मित्र है, मन ही अपना शत्रु है, अपने को जानना पड़ेगा. So श्लोका नंबर 7. एतावदेव ते रूपम यावद् नास्ति विचारणम विचारेणोप उपशांतम तमालोकेन तमो यथा. As long as there is no investigation, as long as there is form for you, that you exist only so long there is no investigation of your nature. You are extinguished by investigation as darkness by light. तो जैसे जैसे इंक्वायरी चालू करेगा, दैट इज द फोर्थ गेटवे ऑफ लिबरेशन, इंक्वायरी स्टार्ट करेगा, वैसे वैसे तेरे को पता चलेगा कि माइंड नाम की कोई चीज है ही नहीं. वो अननेसरी तुझे वो बिकॉज ऑफ थिंकिंग वो परेशान कर रहा है. तो जैसा कि डार्कनेस तुरंत चले जाता है लाइट आने के बाद, वैसे नॉलेज होने के बाद तुरंत तुम्हारा अविद्या चले जाएगी. श्लोका नंबर 8. स्वात्मने एवावतिष्ठम् तुर्यरूपपदे स्थिता हन्तेन्द्रियगणायूयम् किं निरर्थं माकुल. I shall abide in my own self, being established in the abode of nature of Turiya. Alas, organs of senses, why are you agitated in vain? अब ये वीतहव्य अपने ही मन से बात कर रहा है, तो बता रहा है देख कि यार मैं अपने सेल्फ में भी एस्टेब्लिश हो रहा हूँ, मैं अपने डिविनिटी में एस्टेब्लिश हो रहा हूँ, मैं अपने अनफ्रैगमेंटेड सिचुएशन में एस्टेब्लिश हो रहा हूँ, तो मैं वही हूँ. मुझे पता है या नहीं पता है, दैट इज डिफरेंट, बट आई एम दैट. सो नाउ आई डिसाइडेड टू डू दैट. व्हाट इज दैट? जागृत अवस्था इज देयर, इट कम्स एंड गोज. स्वप्न अवस्था इज देयर, इट कम्स एंड गोज. सुषुप्ति अवस्था is there, it comes and goes. But whereas I am always there. And samadhi avastha is there, which also comes and goes, but I am always there. So this state, which is other than the all the state where I am always being, that is called as Jivan Mukti, that is called as self, that is called as divinity. वही, मैं कहीं जाता नहीं. तो ये सेंसेस परेशान क्यों हो रहे, अननेसरी वो क्यों एजिटेट हुए जा रही है. श्लोका नंबर 9. इति चित्तम समाधाय यस्तो अस्पन्द्रियेन्द्रिय अंतरेव शशामस्य क्रमेण प्राण संतति. Concentrating the mind thus, he remained without making his sense throb or move. Gradually the flow of his prana, vital air, just become calm or extinguished within. वो जो अंदर में उसकी जो थ्रॉब ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स था, मोमेंट्स हो रही थी प्राणा की, वो एकदम शांत हो गई और उसका मन एकदम शांत प्रशांत हो गया. श्लोका नंबर 10. अथैव तिष्ठतस्य संवत्सर शतत्रयम् कायो हि वीतहव्यस्य पंगेनो वर्तिले कृता. The body of that Veetahavya, remaining just as for 300 years, was indeed placed within the surface of earth by means of mud. That his body got buried under the mud. So now this Veetahavya, what he was contemplating, and when he started contemplating, his mind becomes so engrossed, one with that second, no stress of even any thought process. So he went into the Nirvikalpa Samadhi. And the time quoted wherein he has remained in the Nirvikalpa Samadhi is 300 years. It is a time scale during that period. We really don't know how many years, how many days, how many months are there in those years. So we will not go into the details of that, but we will definitely know it is a longer duration of time. वर्षात्रयेशते याते सुबुद्धत् स्वयं मुनि संविदे देवस्य तं देहं जग्राहो निपीडितम्. When 300 years has elapsed, that sage woke up by himself. That means the person comes out of this samadhi or a tranquility or the blissful state or maybe Turiya state, that is the fourth state of consciousness, and become Turiya Kita on his own. Consciousness alone took hold of his body, which was squeezed by the earth. Consciousness उसमें था तो उसका प्राण चल रहा था. We know that polar bears are such animals which do hibernation. During the very cold -degree temperature, this polar bear goes inside some cave, and even it is there is a cold, but then they remain there and without any food, water, maybe for 6 months, and again next season they come out. So that is called as hibernation. Here also this Muni Veetahavya must be doing hibernation, so he also remained in hibernation for some time. Nabhutam prana parispanda sarve chitra varodata utpatti praudima sadhya de devanu babhuvasa. There was no movement of the prana or the vital air because of the restraint or the blockage of all opening.
two nostril, two eyes, two ears, mouth, organs of the generation and excretion. Having reached full growth of development in coming in existence, he experienced that prana is only in the heart. So when he is doing all the meditation, when there is no moment of prana was there, there's a complete restraint for two nostril, two eyes, two ears, mouth, and organs of excretion and generation. So all two eyes, two ears, then mouth, then two nose, so two to four to six, one seven, and excretion and generation. So nine doors of the individual. That's all been even though open, it was closed. Having reached full development, coming into the existence, he experienced prana is on the heart. So next shloka 13. कैलासादो मुनिर्भूत्वा संवत्सर शत तथा विद्याधरत्वेन्द्रियत्वं शभभोश्च गणतां तथा प्रतिभासवशा देवा निर्भूय स्वयमिच्छयां प्राग्जन्मस्सु भवान् देहां दृष्टा चिन्तवशा पुनः प्राङ्गमनं imam deham uttaram ravimavishan. Then having been Seja in the Kailash mountain for hundreds years, having experienced thereafter the state of celestial being, Indra, the lord of the demigod and attendant of Shambhu, the destruction aspect of God in the Trinity, at his will and on account of what flashed across his might and once, and having seen the bodies produced from the previous birth, Veetahavya, subject to anxiety, enter the solar orb again for lifting us or saving this body immersed in the mud. So then he what he did with अभी अभी वो समाधि के बाहर आया है तो उसको समाधि तीत परिस्थिति में जाना था. उसने बॉडी अपनी हिला ली, सब ये कर लिया, सूर्य देवता आ गए और उसको उसके बाद वो स्लोली बाहर निकला इंद्र की मदद से, बाकी लोगों की मदद से. So after that 15-16 shloka भानुनाथाभ्यनुध्यायं वीतव्याभिधनं मन प्रविश्य पिङ्गलाकारं गत्वा विन्ध्वस्वकन्दरम् उद्धृतं च धराकोशात् स्वदेहं प्रविवेश स. Meaning is that then the mind named Veetahavya. So now actually whatever the name we have, it is actually the name of our mind. The divinity doesn't have any name. The mind is a reflection of our own consciousness with the thinking process. If you drop this thinking process, mind dissolves and what remains is consciousness, which cannot be named. So what has been named now? Named is Veetahavya Muni. So when the mind named Veetahavya, permitted by the solar deity, having entered the reddish brown form of light, going to the cave of the Vindhya mountain, and raising from the hollow receptacle of the earth, his own body entered it. तथा स्वात्वा जपं कृत्वा सम्पूज्य च दिवाकरं वीतव्य यथा पूर्व प्रदया भूषितो बभो. Then having bath and performed japa and repetition of the sacred words, having worshipped the solar deity, Veetahavya shown as before, adored by intelligence. So what has happened is now when he has reached the Turiya Tita state, that means he is not in a Jagrut state, he is not in the Swapna state, he is not in the Samadhi Shushupti state, he is not in the Samadhi state, he has gone beyond the Samadhi state where he is always happy, contented, blissful, cheerful, over and above, cool and relaxed. That means wherever you are, whatever you are, whenever you are, be 100%. So all these happy mantras which have been told are really marvelous. Life is a time pass. It is a time pass life. Enjoy your life. You come here on a pilgrimage for small time. Let's say you go to Shegaon or a Shirdi or some Balaji temple only for a time pass for some time. You go there, worship the deity, distribute the prasad, give some donations, and come back and enjoy your life. Have a cup of tea and come back. So that is what is the life. So that's what Veetahavya here also. He did lot of austerities. He always tried to do something, but finally when he was sitting quiet, initially his mind troubled him and subsequently mind also started listening to him. When Chitta Nirodha has happened, because he has understood that everything is either divine, or everything is illusion. If you take it as a Chidakash, so every object and every being is divine. And if you take as the worldly thing which has to be ignored, then obviously it is mithya or it is a delusion. The delusion can be corrected only by understanding that it is delusion. ये मिथ्या है, ये जान के उसका करेक्शन हो सकता है. जैसा कि मृगजड़ है,
मृगजल पानी पीने के लिए जाता है, उतना दूर होता है, तब तुरंत स्ट्राइक होता है, अरे यार ये तो मृगजल है। समझदारी आती है, वंस यू कम, समझदारी रहती है तो व्हाट हैपेंस, वी हैव अ happy vibrations in us. Every situations we have happy vibrations in this. That means now in the peaceful mind only the contemplative thoughts are possible. तो अपना पहला कंडीशन क्या है, जो साधना करनी है या पढ़ाई करनी है या कॉन्टेम्पलेशन करना है या भगवान का नाम लेना है या खाना बनाना है या ऑफिस में काम करना है या कहीं जाके खुद का बिजनेस चालू रखना है, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट थिंग इज अंडर ऑल सिचुएशन पीस ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट. वी कैनॉट इग्नोर द पीस ऑफ माइंड. पर ये पीस ऑफ माइंड रखेंगे कैसे, हम तो एजिटेटेड है, इसीलिए बता रहे हैं, इसीलिए तो कंटेम्पलेशन कर रहे हैं. एजिटेशन छोड़ना है, क्योंकि एजिटेशन क्यों होता है, या तो अपने को ये पूरा का पूरा सत्य लगता है, जैसा अपन सोचते हैं ये मेरी पत्नी, ये मेरा, ये पति, वो बच्चा, ये बेटी, ये सब रिलेटिव जगत में बहुत जरूरी है, रिलेशंस यूजफुल भी है, बट वो एब्सोल्यूट जगत में ट्रू नहीं है. एब्सोल्यूट जगत में वो नारायण के ही अनफ्रेगमेंटेड पार्ट्स है. अनफ्रेगमेंटेड यानी वो एक ही नारायण के स्वरूप है. जैसा कि एक ऊपर में सूर्य है और 50 घड़े नीचे रखे, सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब सब 50 घड़ों में सरी का आता है, और ये घड़े एक में से आपसे बोलने लगे, सेंशन हो गए, तो क्या हो जाएगा, वो सबको लगेगा कि मैं ही सूर्य हूँ, बट सूर्य वो नहीं, प्रतिबिंब है. घड़ा फूट गया तो भी प्रतिबिंब में चले जाएगा, सूर्य वहां से हट गया तो भी प्रतिबिंब में चले जाएगा. तो अपने केस में क्या होता है, घड़ा फूट जाता है, सूर्य तो वहां का ही वही है. तो इट गोज एंड देन पीपल स्टार्ट क्राइंग, घड़ा कैसे फूट गया. घड़ा का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है फूट जाना. पंचमहाभूत से जो बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो अपना शरीर बना है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ही है वो फूटना है. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ना पड़ेगा. तो टू ड्रॉप दी बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी में रहना है, बॉडी की यूटिलिटी करना है, बॉडी की सेवा करना है, बॉडी को अच्छा रखना है, पर कॉन्शियसनेस छोड़ना है. दूसरा कॉन्शियसनेस छोड़ना पड़ेगा, जीव कॉन्शियसनेस, कि मैं बॉडी में रह रहा हूँ, वो एक्चुअली सूर्य की कृपा है, इस वजह से वो रिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है. वैसे परमात्मा परमेश्वर की कृपा है कि अपनी गाड़ी चल रही है, तो उसको धन्यवाद देना है, तो वही परमात्मा परमेश्वर. सो बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ना है, जीव कॉन्शियसनेस छोड़ना है, और तीसरा आता है अहंकार, दैट इज ईश्वर कॉन्शियसनेस. मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझे ही नॉलेज है, ईश्वर कॉन्शियसनेस छोड़ना है. सो बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ा, जीव कॉन्शियसनेस छोड़ा, ईश्वर कॉन्शियसनेस छोड़ा, तो बचा क्या, जो बचा है अपने मुंह से नहीं बता सकते, इसलिए परब्रह्म झूठा नहीं हुआ है. यू कैन नॉट टेल दैट परब्रह्म बाय योर ओन माउथ. सो what has been told is the peaceful mind only the contemplation is possible. So the real spiritual practice is going beyond the mind. Mind के आगे जाना ये real spiritual practice है, and not fighting with the mind. Mind आज disturb है तो disturb है, उसको करने दो, अपन दूसरी तरफ जाके आओ. Learn from every experience of life in a positive manner. हर एक्सपीरियंस अपने को सीखना है. तत्व cannot be told, we have to learn. अपन सिर्फ बता नहीं सकते, सीखना पड़ेगा. It is it has to be understood in the right way by an individual. And how that is possible, that's why the stories are told, to have the right version. And what is that right vision, spiritual life is correcting our own vision. Spiritual life में अपने को अपनी visions correct करना है. What are the wrong notions, wrong notion about world, wrong notion about yourself, wrong notion about spiritual practice, and wrong notion about God. जगत क्या है, जगत भगवान का आविर्भूत अनफ्रेगमेंटेड लीला विलास है, ये ख्याल में ही नहीं रहता. दूसरा अपन क्या है, अपने में भी वो प्रत्यक्ष परमात्मा परमेश्वर है. अपन है क्या, वी आर नॉट देयर, ही इज अलोन, दैट इज देयर. थर्ड क्या है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, टू नो द ट्रूथ इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. एंड व्हाट इज अ फोर्थ, फोर्थ इज अ गॉड व्हिच इज सिटिंग इन आवर लविंग हार्ट. दैट मींस बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. विजन हैज टू बी करेक्टेड, देन परसेप्शन विल बी करेक्टेड. सो वेरी नाइसली इट इज बीन टोल्ड नाउ, postulates is said, if vision is corrected, perception will correct. If perception is correct, then the interaction will be correct. And if the interaction is correct, the experiences are correct. And if the experience is correct, then there is no regret in life. अगर अपने experiences सब सही है, तो अपने को regrets नहीं आएगा, अरे यार मैंने मेरे 58 years वेस्ट कर दिए, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कुछ कर नहीं सका, तो ऐसे रिग्रेट्स अपने मन में नहीं आएंगे. सो व्हाट इज आवर प्रेजेंट पोजीशन, वी आर इन द ड्यूअलिटी. हम ड्यूअलिटी में है, हमको पति अलग पत्नी अलग दिखती है, बच्चे अलग दिखते हैं, ड्यूअलिटी में है. सो व्हेनेवर वी सी समथिंग अदर देन वी, देन व्हाट हैपेंस इज वी हैव आइदर डिजायर और एंगर और फियर. अपने को डर लगता है, गुस्सा आता है, नहीं तो डिजायर होती है. सो देन वी आर फार अवे फ्रॉम द रियलिटी. फिर अपन वो रियलिटी से बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है.
Although otherwise what happens is, if you are one with the divinity or you are the wise person, then what happens is, although the divinity is pursued, अपने को सब डुएल दिख रहा है, पति पत्नी भाई बहन पिता पुत्र पुत्री सब कुछ दिख रहा है, divinity is pursued, there is no differentiation on account of divinity, उसमें differentiation नहीं रहता है ना, क्या खुश रहते सबके साथ. Running outside is stopped, worrying inside is stopped, then the mind is at peace and world is beautiful. कितना सुंदर है. Running outside is stopped, बाहर भागना एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह. रनिंग आउटसाइड स्टॉप, वरिंग इनसाइड स्टॉप. वरी अपन इनसाइड करते हैं, अंदर ही अंदर बैठे एक जगह पे वरी करें, अब ऐसा होगा क्या, वैसा होगा, वैसा होगा क्या, वैसा होगा. रनिंग इनसाइड स्टॉप, रनिंग इन आउटसाइड स्टॉप, वरिंग इनसाइड स्टॉप, देन द माइंड इज एट पीस एंड वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल. तब अपने को जगत बहुत अच्छा लगता है. तो कैसा हो जाएगा अपना, डिजायरलेस, फियरलेस, एंगरलेस. एक्सपीरियंस इज अबाइडिंग इन एब्सोल्यूट ट्रूथ. अपन डिजायरलेस, अपने को कुछ नहीं चाहिए, मां साहब दिए छे. फियरलेस, कोई डर नहीं, क्योंकि क्या है, मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है. मृत्यु आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो है पानी पानी में मिलेगा. घड़ा फूट गया तो पानी पानी मिला और कुछ नहीं होने वाला. तो मृत्यु नाम की चीज नहीं है, डर नहीं है और गुस्सा भी नहीं आएगा. पता चलेगा अपना ही विस्तार है, तो कहाँ गुस्सा करना, किससे प्रेम करना और किससे गुस्सा करना. सो व्हाट वी कॉल इन सिंपल वर्ड इज बी हैप्पी. मौज में रहो, मौज करो मत, मौज में रहो. ठीक है. सो श्रुनि दृष्टम पद प्रदाम, अ विजन विच विल गिव अस अल्टीमेट रियलाइजेशन. ये विजन जिसमें आ गया, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगत यानी वो ईश्वर का ही लीला विलास है. कि जिसको समझ गया अच्छा बुरा सब ईश्वर का लीला विलास है, वो सब मुक्त हो गया. सो हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड इन दैट केस, नॉट लाइक वल्चर एटीट्यूड. पता चल गया भगवान मैं कुछ नहीं करूंगा, नॉट लाइक वल्चर एटीट्यूड फॉर अ नेम एंड फेम, नॉट लाइक दैट. Live in this world dynamically, not depressed and frustrated manner and unattached. Dynamically सब काम करना है, but unattached. Unattached कैसे रहेंगे, ईश्वर के साथ अटैच रहे तो आदमी अनअटैच हो जाता है, संसार से अपने आप अनअटैच हो जाता है. लोग बोलेंगे अरे यार सब में रह रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दैट मीन्स ही इज अनअटैच्ड. So he's not getting frustrated, he's not depressed. So inspire ignorant people also to do their duties in an enlightened manner. पहला जॉब क्या है, पहले खुद इंस्पायर रहो. कैसे इंस्पायर रहेंगे, डायनामिकली सब काम करना है, डिप्रेस और फ्रस्ट्रेशन नहीं आना है. और इग्नोरेंट पीपल है जो इग्नोरेंस में है, जिन्होंने ये योग वशिष्ठ ऐसे की पढ़ाई नहीं की, घर में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं की है. कुछ लोग सुनते होंगे तो भी एक कान से सुन के छोड़ देते. कुछ सारे दोस्त भी होंगे जो लोग सुनते हैं पर अप्लाई नहीं करते. उनको लगता है चलो यार सर को या दोस्त को खुश करने के लिए अपन सुन लेते हैं, कोई फायदा नहीं सुनने का. अपने जीवन में लाना है इसको. मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे लिए तो मैं खुद ही बोल ही रहा हूँ, और खुद के लिए इम्प्लीमेंट करना है, खुद का जीवन सुधारना है. तो ये इंस्पायर इग्नोरेंट पीपल ऑल्सो टू डू देयर ड्यूटीज इन एनलाइटेंड वे. उनको भी बहुत खुशी खुशी से आगे ले चलो, और वो भी एक दिन पता चलेगा अरे मैं कितना मूर्ख था, मेरे अंदर में तो डिविनिटी बैठी थी, यही तो ना ठाकुर है, यही तो सब कुछ है, मैं जीवित हूँ, यही तो ठाकुर है, मेरा एग्जिस्टेंस ही तो ठाकुर है, या ईश्वर है, या सेल्फ है, अनडिवाइडेड फ्रैगमेंटेड कॉन्शियसनेस है. सो बी विथ एवरीवन, सबके साथ रहो, डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एक्शन, सबके साथ डेमोन्स्ट्रेट भी करो. लाइफ कुड बी ब्यूटीफुल इन सेम प्लेस वेयर यू आर लिविंग. जहां रह रहे हो, जैसे रह रहे हो, लाइफ एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगा, उसमें फ्रेग्रेंस तुम्हारा खेलने लग जाएगा. स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट बिकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. स्पिरिचुअल लाइफ, अरे मैंने यहाँ टीका लगा लिया, या जैसा आज ग्रीन शर्ट पहन लिया, ग्रीन शर्ट पहन लिया, या फिर ब्लू शर्ट पहन लिया, या फिर भगवा शर्ट पहन लिया. दीज आर ऑल symbolic cartoons of spirituality. These are not the spirituality. Spirituality is truth within. Spirituality is sense of divinity is zero. Spirituality is sense of incompleteness is zero. यानी हम परिपूर्ण है, ये पहली भावना रहना चाहिए. हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे छोड़ के दूसरा कुछ भी जगत में नहीं, सब कुछ मेरा ही लीला विलास है. So you have to come out of all turmoil, politics, and true spiritual life is not becoming ordinary. Remain simple, जो कुछ है सो है. This is a vision and for that purpose the story of Veetahavya has been told. इसीलिए ये स्टोरी ऑफ वीताहव्य बोली है. तो आदमी क्या करता है, जैसा कि वीताहव्य को भी पहले बोल लगा था, सिर्फ पूजा जब ध्यान करना है, तो वही यहाँ बताया, ओनली बाय कर्म 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 यू विल नेवर अटेंड फुलफिलमेंट. इससे मेरा ईश्वर लाभ हो जाएगा, नॉट पॉसिबल. तुमको सोचना पड़ेगा. क्या सोचना पड़ेगा,
जीवन में समझदारी लाना चाहिए. सो यू हैव टू राइज अबाउट द कर्म. कर्म तो करना है पर उसके आगे जाना है. कर्म ऑलवेज कीप यू इन सॉलिड बॉडी लेवल. बॉडी कॉन्शियसनेस और पक्का हो जाता है तो कर्म के बाहर निकलना है. So when we do the karma, we become expert in that, and that work becomes mechanical. And this mechanical work, we become very tasteless. So it is very important to know that mechanic lifestyle is not a spiritual lifestyle. Mechanical lifestyle यानी क्या? 5 बजे उठेंगे, नहा धोएंगे, मंगल आरती को जाएंगे, आएंगे, जब ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद और कुछ स्तोत्र पठन करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर जॉब को जाएंगे, फिर दोपहर में मीटिंग लेंगे, फिर काम करेंगे, फिर आएंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे, सो जाएंगे. This is a very monotonous job. You keep on changing this thing. एक ही नहीं रखना है. Little different pattern as per the wish of the God रखेंगे तो every change will give you again a boost for inspiration. वो आपको पता रहना चाहिए. So he thought now and I should keep my mind absolutely quiet. ये Veetahavya ने सोचा तो enough is enough for this worldly thing. So by attending Nirvikalpa Samadhi, he gave all the activities of life. Let the mind be at peace under all conditions. Sincerely and not for showing it to some people. ऐसा नहीं कि मैं अभी बोर्ड लगा दिया कि spiritual practice is going on, not to talk, keep silence. Like that बोर्ड लगा दिया और अपन उसका publicity करें. No, no, no. When nobody is watching you, nobody is controlling you, you are all free from that time, and still you are doing it everything passionately. In what in and whatever the things your mind goes, from that things you bring it back and put that mind again in the sense of consciousness, that is self, that is divinity, that is unfragmented consciousness, and see the condition of mind. That's why the quality of mind is a very important parameter. So what are the three types of jiva now? One we have already told, drop your body consciousness. Now let us assume we have dropped body consciousness. Now jiva is प्रातिभाषिक जीव, व्यवहारिक जीव एंड पारमार्थिक जीव. प्रातिभाषिक जीव मीन्स व्हेन वी आर एंजॉयिंग एंड सफरिंग ड्यूरिंग ड्रीम. जो स्वप्न में चल रहा है प्रातिभाषिक वो है नहीं, पर अपने को ऐसे प्रतिभाषित हो रहा है. स्वप्न में एंजॉय कर रहे हैं तो स्वप्न ब्रेक नहीं होता है, बट स्वप्न में जैसे ही झटका आता है तो अरे दुख आ गया तो उठ जाता है, पता चलता है हार्ट बीट इज बीटिंग, बट एक्चुअली आई एम वेरी मच इन दी नाउ जागृत अवस्था. सो दैट इज प्रातिभाषिक जीव. व्यवहारिक जीव मीन्स upadhis, like in the now Bhutakash, whatever upadhis, mother, father, sister, husband, wife, likewise in-laws, outlaws, everything comes under Vyavaharik Jiva. But what is important is Paramarthik Jiva. We start working on the mind. अपने माइंड से काम नहीं ले रहे, माइंड पे काम कर रहे. पारमार्थिक जीव इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय possessions and relations and activities together. उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. When we start working on the mind, we are reborn. जब अपन काम कर रहे हैं, we are reborn, and in this birth there is no death. जैसे पता चल गया कि you are one with the divinity, फिर उसमें death नहीं है. If you are living as somebody or the other, then it dies. But the seeker never dies because he lives as nobody. So what is the sadhana? Small doses of working on the mind. छोटे छोटे 1 मिनट 2 मिनट के अपने को वो करना पड़ेगा. 2 to 5 minutes, 4 to 6 times a day. जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि गोली लेना है सुबह दोपहर शाम, वैसे अभी अपने को गोली लेना पड़ेगा सुबह दोपहर शाम. क्या करना पड़ेगा? Just sit quiet for 2-3 minutes. After that, watch your thoughts, and with that start giving a positive suggestions to your thought. अपने आप से मत बोलो, शांति का श्रवण करो. This is the first positive. Second is see towards the sky, sitting in a room, eyes are closed, and when you see towards infinity, mind will become cool. Third is that when air goes inside, when air comes out, that means air is inside the body, air is outside the body. That means body is in the air and air is not in the body. So change your attitude. So when body dies, nothing happens to us, and so then you lose your opportunity to become miserable. तुम दुखी हो ही नहीं सकते, तुमको बॉडी से ही कॉन्शियसनेस नहीं रहा. So likewise you do 4-5 exercise which we have done many times, maybe we'll repeat it again. So slowly withdraw mind from wherever you are seated and be like a mirror. And what is like becoming a mirror? Take a position of nobody. Drop your all past, drop your all future. If you drop your all past, drop your future, you will always remain in the tranquil, blissful state. So what is the message today is? With the world, remain as Dushta Bhav. And with yourself, mind remain as a Sakshi Bhav. मन में कुछ भी विचार आ रहे हैं, उसको पूछो यार ये किसको आ रहा है मन में विचार. चलो मुझे बर्डी जाना है, चलो मुझे नए कपड़े खरीदना है, चलो मुझे सेवा करना है, ये कौन सोच रहा है?
किसके बारे में सोचो, पहले ये माइंड के ऊपर काम कर। और जगत के बारे में क्या, दृष्टा भाव। जगत में कोई भी कितनी भी गलतियां कर रहा है, नो कमेंट्स। कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा है, नो कमेंट्स। देखो सुनो बोलो मत, कोई कमेंट्स नहीं। तो जगत के बारे में दृष्टा भाव और अपने बारे में साक्षी भाव। और 2 से 3 बार दिन भर में बैठना है शांति से, 2 से 5 मिनट। टाइम बढ़ाना है स्लोली स्लोली स्लोली, 15-15 मिनट। अगर अपन 3 बार 15-15 मिनट बैठते हैं तो अपना मन बहुत शांत हो जाएगा। So let us pray that Almighty He will give us a strength to do this 3 times and allow us to remain with the world Drashta Bhav and with yourself as a Sakshita. With this prayers. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tatsat. Sri Ramachandra Arpanamastu. Submitting the divine fruits to the holy feet of Sri Ramachandra. रामचंद्र भगवान के चरणों में शत शत नमन।